शुक्रिया। मेरी तरफ से नमस्ते सभी को। मैं मोहित कुमार, इन्वेंटर ऑफ द रेलवे टेक्नोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ द यूनिकॉर्न ब्रदर्स। Bonjour tout le monde, ici c'est Monsieur Mohit qui est l'inventeur de la technologie Railwind et il est aussi le PDG de l'Unicorn Brothers. यस, वैसे तो आपने बहुत सारी रेलवे टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशंस देखी हैं, लेकिन आज ये प्रेजेंटेशन कुछ खास है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन स्पेशली कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। Vous auriez pu déjà vu d'autres présentations sur la technologie Railwind, mais cette présentation c'est une des meilleures présentations qu'on va faire sur cette technologie aujourd'hui. यस, सो RWT रेल विंड टेक्नोलॉजी 2.0, turning trains motions into power plants. La technologie RWT, Railwind Technology, ça signifie transformer le mouvement des trains en énergie. Railway technology that capture the high pressure airflow of moving trains and convert it into the renewable electricity without an extra inch of new land. La technologie Railwind capte le flux d'air à haute pression généré par les trains en mouvement et le transforme en électricité renouvelable, sans occuper d'autres terrains nouvelles. जी, और RWT का जो स्पेसिफिकेशन है वो 2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बनाता है। हर 500 मीटर के इंटरवल पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। La technologie RWT, ça génère 2 mégawatts d'électricité par unité. Et il faut installer cette technologie tous les 500 mètres sur les corridors de voie ferrée. और इसी के साथ ही हम 170 प्लस कंट्री के अंदर IP प्रोटेक्टेड हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Notre invention est déjà couverte dans plus de 170 pays du monde. जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पेटेंट ग्रांट भी हो चुका है। Notre idée est déjà couverte par le gouvernement de l'Inde. जी, सो जो विजन है रेलवे टेक्नोलॉजी का, एवरी किलोमीटर ऑफ रेल बिकम ए मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। 5 kilomètres de voie ferrée devient 1 mégawatt d'énergie renouvelable. The world does not need more land for power, it needs smarter infrastructure. We transform the railway network into the largest distributed clean energy grid on earth. Le monde n'a pas besoin de plus de terre pour plus d'électricité, mais il a besoin d'infrastructures plus intelligentes. Nous transformons le réseau ferroviaire en le plus grand réseau d'énergie propre distribué de la planète. राइट, सो द प्रॉब्लम वी एड्रेस, हमने जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया वो है क्लीन एनर्जी इज ग्रोइंग बट इट्स ईटिंग लैंड, टाइम एंड मनी। L'énergie éolienne et aussi l'énergie propre se développent dans le monde, mais elle a besoin de plus de terre et aussi plus de temps et plus de l'argent. ओके, ये कुछ डेटा है। 22 बिलियन यूनिट्स हर साल कंज्यूम होती हैं इंडियन रेलवे द्वारा। 22 milliards d'électricité est consommée chaque année par le réseau ferroviaire en Inde. दिस इज द रिपोर्ट बाय इंडियन रेलवे 2023 to 24। On a basé cette donnée sur le reportage du gouvernement de l'Inde qui de l'année 2022-2023. यस, और जो प्लैनेट अर्थ पर 37% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन एमिशन जो है, वो ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर से होता है। Et aussi 37% des émissions mondiales de dioxyde de carbone provient des secteurs des transports et de l'énergie. सोर्स बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। Cette donnée est tirée
du source euh, Association internationale de l'énergie. यस। एंड 4 से 5 एकड़ की जमीन की रिक्वायरमेंट होती है जब हम सोलर पावर प्लांट, जब हम 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं। Et on a aussi besoin de 4 ou 5 acres de terrain pour chaque mégawatt d'énergie solaire à usage industriel. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। Mais on n'a pas besoin de terrain pour produire de l'électricité. On va juste utiliser le réseau ferroviaire qui existe déjà. यस, और देख सकते हैं कि 2050 तक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो 75% तक इंक्रीज हो जाएगी। Le monde aura besoin on aura besoin de plus de 75% de l'électricité d'ici 2050. C'est-à-dire que 75% de croissance de la demande mondiale d'électricité d'ici 2050. सो सॉल्यूशंस है, द सॉल्यूशंस इज रेलविंड टेक्नोलॉजी 2.0, हार्वेस्टिंग मोशन नॉट लैंड। Donc, on va exploiter le mouvement du train, mais on ne va pas avoir besoin de plus de terrain. A patent protected turbine style installed beneath railway tracks. Every passing train spin and every spin become electricity. Une turbine brevetée qui est installée sur les voies ferrées et chaque train qui passe la fait tourner. Chaque train qui passe fait tourner cette turbine qui est installée sur les voies ferrées. Chaque rotation se transforme en électricité. Yes, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। Vous pouvez même voir sur cette image qui est à droite, on a le réseau ferroviaire et on a un train qui passe. La turbine est installée sous le réseau, sous la voie ferrée. Et le moment qu'un train va passer, la turbine va tourner. Et c'est ça qui va générer de l'électricité. जिसके लिए हमें जीरो न्यू लैंड्स, मतलब हमें कोई भी नई लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एग्जिस्टिंग रेलवे कॉरिडोर्स को यूज करते हैं। Comme j'ai déjà souligné auparavant, on n'aura pas besoin de nouveaux terrains et on va utiliser les corridors ferroviaires qui existent déjà. यस, ऑलवेज ऑन एनर्जी, ये हमेशा ऑन रहती है, ये इंडिपेंडेंट है सन के एंड विंड वेदर के। Ça, c'est une énergie disponible en permanence et qui est indépendante des conditions météorologiques comme soleil et vent. Comme vous savez déjà, pour produire l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, on dépend des conditions météorologiques. S'il y a du vent, s'il y a du soleil, dans ce cas seulement, on pourrait produire de l'électricité. Mais pour cette technologie, on n'a pas besoin de... On ne dépend pas des conditions météorologiques. Plug into grid. Yes, Railwind technology is easy to plug into grid, compatible with the railway power and distributions. Ça, c'est compatible avec l'alimentation et la distribution électrique ferroviaire. Globally scalable, freight, metro, bullet and urban transit. C'est aussi évolutif à l'échelle mondiale. Frais, métro, train à grande vitesse et transport urbain, tout ça, on pourrait utiliser pour produire de l'électricité. ठीक है. So how does it works from motion to the megawatt? Comment ça se fonctionne? On va voir maintenant. Yes, train moves, airflow captured, turbine converts into electricity and clean kilowatt hour deliver. Le train avance et le mouvement de train à grande vitesse génère une puissante onde de pression aérodynamique sous la voie. So the product is a rail wind technology RWT unit, a modular low maintenance turbine system engineered for the installations directly beneath existing railway track.
La technologie Railwind 2,0, ça c'est un système de turbine modulaire nécessitant peu d'entretien qui est conçu pour être installé directement sous les voies ferrées existantes. Okay. So there is a differentiator कि रेलविंड टेक्नोलॉजी कैसे जीत जाती है. On va voir maintenant comment la technologie Railwind, elle a beaucoup de, elle est beaucoup plus efficace que d'autres technologies qui fonctionnent dans le domaine de l'énergie renouvelable ou l'énergie propre ou l'énergie verte. Yes. Fuel free and forever. Du carburant gratuit pour toujours. 100% emission free. Ça, c'est 100% sans émission. Il n'y a pas d'émission de dioxyde de carbone. Zero new land. On n'a pas besoin de plus de terre. Yes, always on, independent of sun, wind and weather availability. Comme nous avons déjà vu tout à l'heure, ça c'est toujours fonctionnel, c'est toujours opérationnel et c'est indépendant de l'ensoleillement ou du vent ou des conditions météorologiques quiconques. Energy independence reduce railway grids dependency and operating cost. En matière d'indépendance énergétique, réduit la dépendance vis-à-vis du réseau ferroviaire et les coûts d'exploitation. Yes. ESG plus carbon credits, new revenue stream for the government and the railway operators. Le gouvernement ou de nouvelles sources de revenus pour les pouvoirs publics, le gouvernement et aussi les opérateurs de cette technologie. Yes. Smart city ready, integrate with the EV charging stations and the distribution grids. Ça, c'est prêt pour les villes intelligentes. C'est en phase avec l'idée de ville intelligente. Et cette technologie s'intègre aux bornes de recharge pour véhicules électriques et au réseau distribué. Low maintenance, long life infrastructure with the minimal ecological impact. Cette technologie a besoin de peu d'entretien. C'est une infrastructure à longue durée de vie et à impact écologique minimal. Okay, so the market opportunity. आप इनको ऐसे समझाइए कि ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी, जितनी अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए है, ये मार्केट के लिए भी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. $1 ट्रिलियन रेलवेंट टेक्नोलॉजी. Ça, cette technologie présente une grande opportunité pour le marché. Ça, c'est, c'est un marché d'un trillion de dollars. Railwind sit at the intersection of the three booming market: renewable energy, railway electrification, and ESG infrastructure investments. Railwind, ça se situe à la croisée de trois marchés en plein essor: les énergies renouvelables, l'électrification ferroviaire et l'investissement dans les infrastructures ESG. Yes, TAM $1.9 trillion, SAM $210 billion, SOM $5 billion. What is this TAM and SAM and SOM? I have no idea. So You just have to just represent TAM, SAM, SOM. Like TAM okay, stand for Global Renewable Energy Market, SAM stand okay, for okay, okay. Railway Electrification and the Sustainable Infra, and $5 billion we required to integrate in the Asia and the European rail integrate deployment. All right, all right. So pour le marché mondial des énergies renouvelables, cette marché est estimé pour 1,9 trillion de dollars. Pour l'électrification ferroviaire et infrastructure durable, ce marché est estimé de 210 milliards de dollars. Désolé. Et pour le déploiement intégré au réseau ferroviaire en Asie et en Europe, ça, ce marché est estimé pour 5 milliards de dollars.
Good. So there is a business model. There is a Il business y a, model. Seven stream, one engine. il y a un modèle de commerce, euh, sept, il y a 7 sources de revenus et un seul engin. यस, लोग हमसे पूछते हैं कि RWT पैसा कैसे कमाती है। हमें जो यूनिकॉर्न ब्रदर्स के इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे डिविडेंड आएगा, या उनको कैसे प्रॉफिट शेयरिंग आएगी, ये उसका आंसर है। बोलिए इनको ऐसे। Il y a des gens qui nous posent la question comment la technologie RWT apporte du revenu à notre entreprise. Cette हम्म। présentation, cette diapo, ça va répondre à cette question. First of all, electricity sale, power sold to the railway and the grid corporations. Tout d'abord, on vend de l'électricité qu'on produit et cette électricité est vendue aux sommet de fer et aussi aux gestionnaires de réseau. Technical licensing, license Railwind IP globally. Licence technologique, on a aussi la licence mondiale de la propriété intellectuelle pour la technologie Railwind. Government grants, climate tech and renewable funding. Le gouvernement nous accorde aussi des subventions, financement des technologies climatiques et des énergies renouvelables. और अभी हम क्राउड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट ग्रांट्स पर भी काम कर रहे हैं। En ce moment, on aussi travaille sur la subvention publique pour avoir beaucoup plus de fonds pour que cette énergie puisse être concrétisée. देन कार्बन क्रेडिट्स, Crédit carbone, देन टेक्निकल पार्टनरशिप, जॉइंट डिप्लॉयमेंट कोलैबोरेशंस, on a aussi des partenariats technologiques. On collabore pour le déploiement conjoint avec d'autres entreprises. EPC contract, engineering procurement and construction contract, including engineering and installation partnership. On a des contrats EPC, engineering, partenariat d'ingénierie et d'installation. Global expansion, cross-border infrastructure projects. Notre technologie est aussi c'est en train de répondre mondialement et on a des projets d'infrastructure transfrontaliers. इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर दुनिया में जिन देशों में रेलवे ट्रैक्स हैं, हम उस जगह पर इस RWT को इंटीग्रेट कर सकते हैं। Tous les pays qui partagent le réseau ferroviaire, on pourrait même installer cette technologie dans ces pays. Par exemple, en Union européenne, on a l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne est connecté grâce au réseau ferroviaire. Donc, on pourrait installer cette technologie même à l'Europe. Yes, and business model Canva, the full picture at glance you can see. Quel est le modèle économique? Une vue d'ensemble complète en un coup d'œil. जी, तो हमारे जो की पार्टनर्स हैं रेलवे टेक्नोलॉजी के, वो है रेलवे डिपार्टमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंफ्रा पार्टनर्स। Quels sont nos partenaires? Les partenaires clés de notre entreprise Unicorn Brothers, c'est département ferroviaire, agence chargée des énergies renouvelables, organismes publics et partenaires d'infrastructure. जी, एंड की एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलट डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पेटेंट्स। Les activités clés de notre entreprise, c'est recherche et développement, déploiement pilote et fabrication et intégration au réseau ferroviaire. Et aussi, on dépose notre idée, notre technologie pour le brevet.
Value propositions, renewable energy from the existing railway infrastructure with zero new land. Valor apportée de cette technologie, c'est énergie renouvelable issue du réseau ferroviaire existant et on n'a pas besoin de nouveaux terrains, pas du tout. Yes. So, and the customer relationship, government engagements, long-term partnership with the government's ESG collaborations. En ce qui concerne les relations clients, engagement auprès des pouvoirs publics, partenariat à long terme et aussi collaboration ESG. जी. And our customer segments, railway, governments, energy corporation, and infrastructure funds. En ce qui concerne les clients dans le secteur dans les différents secteurs, c'est chemin de fer, pouvoir public, groupe énergétique et fonds d'infrastructure. And key sources, patents, engineering, IP, technical research, pilot infra. Les ressources clés, ce sont brevets, propriétés intellectuelles en ingénierie, recherche technique et infrastructure pilote. Channel, this is B2G. Railwind technology is a business to government. राइट ये बिजनेस टू गवर्नमेंट आउटरीच प्रोडक्ट है ये किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बना Quels sont les canaux qu'on suit? Ce sont sensibilisation des entreprises auprès des pouvoirs publics. Ça, cette technologie est conçue pour pour mettre en service grâce au partenariat avec le gouvernement. C'est pas avec business to business, c'est pas avec une entreprise, partenariat d'une entreprise avec une autre entreprise. C'est seulement grâce au gouvernement qu'on pourrait mettre cette idée en pratique. Climate Tech Summits, Energy Conferences. On aussi participe au sommet sur les technologies climatiques et conférences sur l'énergie. And the cost structure is research and development, manufacturing, installation, compliances and operations. Structure des coûts, c'est recherche et développement, fabrication, installation, mise en conformité et aussi exploitation. Yes. And finally, revenue streams, electricity, sale, licensing, grants, carbon credits. Quelles sont nos sources de recettes? C'est électricité qu'on va produire, droit de licence, subvention et crédit carbone. ओके टारगेट ऑडियंस हमारी जो टारगेट ऑडियंस हैं जिनको हम इस चीज को सेल करेंगे रेलविंड टेक्नोलॉजी को और उससे जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को वो ये वाले लोग हैं मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कार्बन क्रेडिट्स हु वी सेल कौन है जिसको हम सेल कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स जिसको हम क्या सेल कर रहे हैं बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशंस ईएसजी इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स इंटरनेशनल ग्रांट्स एजेंसीज और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो B2G पार्टनरशिप जॉइंट डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाइमेट टेक पोजीशन ROI ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एंड ग्रैंड फोकस आउटरीच प्लीज गो अहेड Public cible à qui nous vendons nos produits. Nous vendons des crédits carbone, donc nous vendons aux décideurs du secteur des infrastructures. Nous vendons aussi aux corporations des énergies renouvelables, les opérateurs du secteur des énergies propres. Nous vendons nos produits aussi aux investisseurs ESG, aux fonds axés sur le développement durable et fonds d'infrastructure, investisseurs en actifs à long terme. Nous vendons ce produit aussi aux agences internationales de financement, les acteurs qui soutiennent l'innovation climatique. On a des partenariats avec le gouvernement, on a des modèles de déploiement conjoint avec d'autres entreprises privées. Positionnement, on se positionne dans les technologies climatiques,
modèle d'investissement dans les infrastructures axées et aussi actions de sensibilisation axées sur les subventions publiques. गुड. सो करंट ट्रैक्शंस, ये जो स्लाइड है ये आपको बताएगी कि हम अभी करंट में क्या कर रहे हैं, हमारी करंट पोजीशन क्या है. Quelle est notre position actuelle? Ce diapo va parler de cet aspect. ओके. सो प्रोटोटाइप completed, initial proof of concept and the miniature model built. On a déjà terminé le prototype. Le prototype est achevé. Et ça, c'est une preuve de concept initial. Et maquette miniature est aussi réalisée. Validated engineering, ANSYS, CFD, FEA, CAD, SolidWorks simulations. Notre ingénierie est validée. On a des simulations ANSYS, CFD, FEA, CAD et SolidWorks simulation. And pilot stage in progress. Specification and the scalability, architecture in active developments. La phase pilote est en cours. Spécification et architecture évolutive en cours de développement. And the innovations is DPIIT startup recognized, eligible for the government grants and the climate tech programs. Notre startup est DPIIT. Notre startup est reconnu par le DPIIT et il est aussi éligible aux subventions gouvernementales et aux programmes dédiés aux technologies climatiques. Governments and the rail engagement, Ministry of Railway, Railway Boards, ONGC and IITs. On a des collaborations avec le gouvernement et le secteur ferroviaire. On a des collaborations avec le ministère des chemins de fer, avec le conseil des chemins de fer, avec cette entreprise ONGC qui est une des plus grandes entreprises publiques en Inde. Et on a aussi une collaboration avec l'Institut indien de la technologie. Yes. qui est इनके une साथ pour la इनके साथ technologie. हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो चुकी हैं. On a déjà eu des réunions avec les responsables de tous ces organismes publics en Inde. Patent granted and filed, India plus 27 European country plus US, Australia, Russia, Vietnam, and also PCT, WIPO plus 170 plus countries is IP protected. On a déposé notre brevet et notre brevet a été délivré, notre brevet a été reconnu en Inde et on a aussi déposé notre brevet dans 27 pays de l'Union européenne, aux États-Unis, en Australie, en Russie, au Vietnam. Donc, au total, dans plus de 170 pays, la propriété intellectuelle de notre technologie est reconnue. Okay, so this is the structure, right? Patents and the IP, that is Intellectual Property, Government of India, WIPO, World Intellectual Property Organizations, European Patent Office. This is the current positions of the IPR, Intellectual Property Rights. En ce qui concerne la propriété, le droit de propriété intellectuelle, ça s'est délivré en Inde et déposé dans les principales économies et protégé à l'échelle mondiale via le cadre PCT-OMP. La propriété intellectuelle de Railwind est prête à la fois pour le déploiement et pour l'octroi de licences. Great. Yes, Railwind technology has been also recognized, and the relationship with the great leaders, backed by the leaders and validated by the institutions. Notre technologie est soutenue par des politiciens, par des leaders, et c'est aussi validé par des institutions. Comme vous pouvez voir sur l'écran,
c'est le ministre des Transports routiers en Inde qui félicite l'une des responsables de notre entreprise. Mm-hmm. So that is Bharat Pratibha Samman, India Climate Conclave 2025, SDG Championship 2025, Nepal. Notre entreprise a été décernée Bharat Pratibha Samman et aussi on a participé au conclave sur le climat en Inde en 2025 et notre technologie a été champion des ODD 2025 au Népal. Mm-hmm. And the high level engagements, Sri Nitin Gadkari ji, Ajay Bhatt ji, Ajay Tamta ji, Railway Boards, ONG Leadership, IIT Bombay, former Governor of the Maharashtra Sri Bhagat Singh Koshari ji, and IIT Delhi also engaged with this technology. On a eu des engagements avec tous ces responsables politiques en Inde et aussi avec les institutions technologiques. Donc, sur notre écran, vous avez le ministre du gouvernement de l'Union indien, Sri Nitin Gadkari ji, et vous avez aussi Sri Ajay Tamta ji. Notre technologie, on a aussi eu des réunions avec l'Institut indien de la technologie de Bombay et aussi l'Institut indien de la technologie de Delhi. Ce sont des institutions pour la technologie en Inde et ils sont prestigieux. Ce sont des institutions prestigieuses en ce qui concerne la technologie et l'étude de technologie. Mm-hmm. So this is the roadmap from prototype to the planet scales, which mean pilot. Quel chemin on va suivre? On va, comme nous avons déjà parlé de la maquette miniature de notre technologie, le prototype, et après on va concrétiser cette idée à l'échelle mondiale. Mm-hmm. That is prototype, patent, pilot development, railway trials, grid integrations, international expansion, and scale. Donc, il y a 6 étapes en ce qui concerne la concrétisation de cette technologie. La première, c'est prototype plus recherche sur les brevets. La seconde, c'est développement du projet pilote qui est en cours. La troisième, c'est essai sur rail. La quatrième, c'est intégration au réseau. La cinquième, c'est expansion internationale. Et la sixième et la dernière, c'est le déploiement au niveau mondial. Hmm. 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 Okay. Yes, this is the current demand. Okay, मतलब इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए, ग्राउंड पर ट्रायल्स करने के लिए ये फंड रिक्वायर्ड है, विच मीन्स $1 million. Combien d'argent on aura besoin pour mettre en place cette technologie sur le terrain? On a besoin d'un million de dollars pour concrétiser cette idée. जिसमें कि है 35% पायलट डेवलपमेंट, 25% प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 15% मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10% पेटेंट एंड रेगुलेटरी एक्सपेंशन, 10% टीम एंड ऑपरेशंस एंड 6% बिजनेस डेवलपमेंट. 35% de ce fonds va être dépensé sur le déploiement pilote. 25% du fonds sera dépensé sur ingénierie produit et recherche et développement. 15% du fonds sera dépensé sur la fabrication et sur le développement de l'infrastructure. 10% du fonds sera dépensé sur le brevet et sur l'expansion réglementaire.
10% du fonds sera donné comme salaire à notre équipe et aussi pour l'exploitation de notre bureau. 6% du fonds sera dépensé pour le développement de notre commerce de cette idée. Développement pour le développement commercial. Great. And yes, meet the team, that is engineers, operators, and the believers. You can see the team of the Relevant Technology and the Unicorn Brothers. En ce qui concerne l'équipe de cette technologie et aussi de notre entreprise Unicorn Brothers, vous pouvez voir sur l'écran, vous avez 5 personnes. La première qui est aussi présent avec nous, qui nous a présenté cette technologie, c'est M. Mohit Kumar. Il est le fondateur et ingénieur-chef et il est aussi le président directeur général de l'Unicorn Brothers. C'est lui qui a inventé cette technologie de Railwind. Le deuxième, c'est M. Yasvir Singh. Il est responsable pour opérations techniques. Le troisième, nous avons Alexis Stefkin, qui est un membre de l'équipe de projet. Le quatrième, c'est M. Krishna Kumar Deva, qui est conseiller en start-up. Et le dernier, c'est M. Jigesh Patel, qui est directeur technique pour Unicorn Brothers. Okay, so multiple pathway to liquidity. This is the exit options. Okay. Strategic acquisitions, infrastructure partnership, technology licensing, ESG infrastructure fund, IPO opportunity. Yes, everyone wants IPO. Okay, so this is the public listing and the government integrations. Si vous voulez sortir, si vous voulez retirer votre argent, il y a plusieurs voies d'accès à la liquidité. La première, c'est acquisition stratégique. La deuxième, c'est partenariat d'infrastructure. La troisième, c'est octroi de licence. Le quatrième, c'est fonds d'infrastructure ESG. Le cinquième que tout le monde demande, c'est opportunité d'introduction en bourse. Et la dernière, c'est intégration gouvernementale. Okay, so Relevant Technology, let's power the world in motion. Railwind Technology, la technologie Railwind 2.0, alimentons le monde en mouvement. All right, so एक और बिग अपडेट है आज के सेशन का, राइट, वो ये कि अब से 10 दिन बाद 1 जुलाई को यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा और वो शेयर का प्राइस होने वाला है $0.016 पर शेयर. Nous avons aussi une grande nouvelle à partager avec vous. D'ici 10 jours, le prix dans la bourse de l'Unicorn Brothers, ça va augmenter de $0.016. 0,016 $. D'ici 2 jours, le prix dans la bourse, ça va augmenter de $0.016. ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का शेयर्स क्यों स्ट्रांग है. क्या सिर्फ उसके पास एक ही टेक्नोलॉजी है, रेलेवेंट टेक्नोलॉजी, या फिर उसके पास कुछ और भी है? Pourquoi ce prix va augmenter? Est-ce que l'Unicorn Brothers a seulement une technologie dans son portefeuille ou on a plusieurs technologies dans notre portefeuille? जी, मैं आपके सामने पहली बार प्रेजेंट कर रहा हूं हमारे अगले प्रोजेक्ट AI सोल की ये वीडियो प्रेजेंटेशन.
Monsieur Moïse va présenter pour la première fois cette nouvelle technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle. Yes. Every day, millions of minds carry pressure no one can see. But what if the mind could finally be understood? AI Soul studies your past and present medical history, your routines, and your wellness patterns. This becomes your psychomedical passport, a living profile of your emotional and medical journey. For organizations, it helps identify stress before it turns into burnout. The mental AI assistant understands your thoughts, emotions, and state of mind in real time. Your digital identity preserves your knowledge, your presence, and your legacy. Your digital twin learns, evolves, and represents you beyond physical limits. 4 intelligent components. 1. Complete wellness ecosystem. Wellness AI Soul. AI Soul by Solia. Understand, protect, evolve. जी, इनको बताइए कि हमारे पास में ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो $1 बिलियन का मार्केट कैप होल्ड किए हुए है। On a cette nouvelle technologie dans notre portefeuille qui a déjà plus d'un milliard de dollars dans la bourse. जस्ट अ मोमेंट ना। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको अब बताना चाहता हूं हमारे इकोसिस्टम के बारे में कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स के इकोसिस्टम में अभी क्या क्या है जो हमने लास्ट टाइम अभी रिलीज किया था। Maintenant, il va parler à propos de l'écosystème de l'Unicorn Brothers, tous les projets, toutes les initiatives qui sont en cours dans l'entreprise Unicorn Brothers. ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? Oui, yes. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन, रेलविंड टेक्नोलॉजी। La première, c'est Railwind Technology. दिस इज AI सोल। La deuxième, c'est AI Soul. दिस इज ओजोन एक्स। La troisième, c'est Ojonx. द स्पेस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। Le quatrième, c'est une technologie euh, pour le tri des matériaux, pour le tri des décès en espace, Space Waste System. सीवेज हाइड्रो पावर प्लांट्स। On a aussi une technologie, un projet pour sewage hydropower प्लांट्स। power plants. जी, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट फॉर द हाइपरसोनिक डिफेंस एयरक्राफ्ट। On a aussi un projet pour orbital spacecraft, hypersonic defense aircraft. Ce sont pour l'armée, pour la force aérienne. Yes, and the most upcoming projects that may be seen in the EV vehicles, that is NEOMS engine. Le projet qu'on va lancer, qui est à venir, c'est NUMS Engine. Yes, C'était electric vehicle, no? It was electric yes, vehicle. for the electric vehicle, that dynamic air compression engine. Ça, c'est une véhicule électrique qui fonctionne sur Dynamic Air Compression Engine. ओके, तो अभी इनको बताइए कि यस, आपको यूनिकॉर्न ब्रदर्स का शेयर्स क्यों बाय करना चाहिए। इसके वो इतने सारे रीजंस हैं कि इन सभी टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर होल्डर्स को जाने वाला है इन द फॉर्म ऑफ
profit shares and in the form of dividends. Donc, maintenant, pourquoi vous devez investir dans l'Unicorn Brothers? Parce que le profit que l'Unicorn Brothers va faire, ça va être partagé avec tous les investisseurs qui vont investir dans notre projet. Et c'est pas seulement c'est pas seulement le revenu qu'on va générer grâce à la technologie Railwind, mais avec tous les projets qui sont en cours dans notre portefeuille. Donc, tous ces projets qu'on vient de venir, tout le revenu qu'on va gagner dans le marché, ça va être partagé avec tous nos investisseurs. ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए शेयर पैकेज बुक करने चाहिए, रिजर्व करने चाहिए, क्योंकि अगले 10 दिन के अंदर ही शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। Vous devez investir dès maintenant parce que le prix de share, ça va augmenter de 0,016 de dollars d'ici 10 jours. ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन इतना ही था। मैं चाहूँगा कि सूरज जी आप एक बार चैट एक बार देख लीजिए, चैट में कोई चीज़ है हमारे लायक। C'est tout pour maintenant. Je vais juste jeter un coup d'œil dans la section de messages pour voir s'il y a quelque chose. Salut à tous. Oui, salut. The translator is there. Yes. His translation is trustworthy. Don't forget to leave your questions in the chat box. I have brought the device to listen, the headphone. Someone is saying that मेरा आवाज थोड़ा धीमा है. You can hear or no? सही है। C'est un énorme projet d'avenir. It is a big project for the future. Very nice. Beautiful competition, a good competition with the CIE. I have no idea what CIE is. J'aimerais savoir, nous avons collecté combien de dollars sur 1 million de dollars. I would like to know how much we have collected for $1 million. Like this question Right is now? formulated badly. This is a mix of past tense as well as. I would like to know how much we have collected out of $1 billion. Okay, yeah, this is the question. How much we have collected out of 1 billion? Right now we have $100K. En ce moment, on a 100 000 de dollars. Okay. And Donc, quand l'introduction en bourse, when are you going to introduce this idea in the stock market? 2030 onwards. On va introduire cette technologie, cette idée, on va être listé sur la bourse après ou en 2030. Someone else has replied, introduction en bourse en 2031. We will list our product on the stock exchange in 2031. Okay. मुझे आंसर देना है? नहीं, वो किसी ने रिप्लाई किया हुआ है. ठीक है. La prochaine augmentation, j'ai pas bien saisi, c'est 0,06 ou bien 0, it was 0.016, right? Yes. No, ये प्राइस होगा अभी 1 जुलाई से. ससरा 0,016, pas 0,06. Okay. There is someone who is already replying, so no need to. Okay. Escalate premier दिख रहा. Okay. किसी ने कोई डिविडेंड का क्वेश्चन भी पूछा है क्या? 1 minute, sir. Just 1 second. Pura var you liber. Here don't suppose info on this mother. Yeah, someone is asking to have a financial liberty in this project. How much money or how many dollars one has to invest? Yes. Okay. At least $10K, $10,000. At least you have to invest it
to buy the shares of the Unicorn Brothers to make financial independence in Uh, 2030 onwards. Monsieur ou Madame Fille Unique, Madame Fille Unique, pour avoir une liberté financière dans son projet, il faut investir au moins $10,000, selon Monsieur Mohit. Est-ce que vous envisagez déposer un brevet en Afrique? Do you plan to submit for a patent in Africa? Yes, we have राइट। और इनको पूछिए ऐसा कि हमारे पेटेंट फाइल करने से क्या ये आपके लिए आसान होगा, इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना आपकी कंट्री में, बिजनेस ये आसान होगा उधर से बिजनेस लेना? You have already done that, no? You have already submitted your project for patent in Africa. नहीं, अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन हमारा अब क्या कहते हैं, अब थर्ड फेज के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसमें हम पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं। On n'a pas déposé notre brevet en Afrique en ce moment, mais M. Moït voudrait savoir si on dépose un brevet en Afrique, est-ce que ce sera facile pour vous d'apporter d'autres investisseurs à cette technologie? ठीक है। Someone is asking which stock Je pense exchange? que je peux répondre à cette question-là. Oui, allez-y. Oui, c'est Kofi, le directeur Afrique de Unicorn Brothers. Alors, je pense que si jamais il y a un brevet qui est déposé en Afrique, ça va pousser plus d'institutions à tourner leur regard vers cette technologie. Parce qu'en fait, ici en Afrique, c'est ce qui nous manque. C'est vrai, on parle d'investissement en ligne, mais la structuration fait que aujourd'hui, certaines institutions ne peuvent pas s'engager. Mais s'il y a un brevet qui est déposé en tant qu'une technologie reconnue de façon mondiale, vous allez comprendre que même les gouvernements vont s'intéresser et vont s'investir dans cette entreprise. Donc, pour répondre à sa question, oui, effectivement, il y aura plus d'investissement et il y aura plus d'intéressement par rapport au gouvernement africain. He is saying that if you file for patent in Africa, there will be, of course, a lot of investment, a lot of interest by the African governments. ओके, तो इनको पूछिए वो अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं, हम इस पे थर्ड फेज के अंदर प्लान करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। Quels sont les pays en Afrique qui seraient intéressés à cette technologie? Dans la troisième phase on pourrait déposer notre brevet. Quels sont les pays, M. Kofi? Bon, déjà, il faut dire que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, le pays que je sais qui serait intéressé, si vraiment je fais les démarches qu'il faut, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, bon, après, on peut étendre à tous les pays aujourd'hui qui utilisent le réseau ferroviaire, comme le Sénégal, le Burkina qui ont construit son réseau. Bon, il y a plusieurs pays qui peuvent être intéressés. Tous les pays où il y a un réseau ferroviaire, je pense qu'ils peuvent être intéressés. Mais déjà, la Côte d'Ivoire, c'est sûr que la Côte d'Ivoire sera intéressée. According to him, he's sure about Côte d'Ivoire, but he's also saying that in all the countries where you have rail network in Africa, like Senegal or Burkina Faso, Benin, Togo, all of them will be interested, but he's damn sure about Côte d'Ivoire. Ivory Coast. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, हम जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एक कॉमन अफ्रीकन ट्रीटी होता है, राइट, जिसके अंदर सारी अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप्स होते हैं, हम एक साथ ही उन सबके अंदर फाइल करने वाले हैं फिर। Il y a un traité pour l'Afrique commun et on va déposer notre brevet selon ce cadre de l'Afrique commun
pour que nous puissions avoir accès à plusieurs pays en Afrique. Oui, effectivement, effectivement. C'est un processus que je connais. Et ça sera vraiment intéressant. Je lui en parlais la dernière fois. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on a beaucoup d'investissements en ligne. On a beaucoup d'investissements en ligne. Mais tous ces investissements-là, il n'y a aucune preuve palpable pour dire que voilà, on a quelque chose de concret. Et je pense que en déposant le brevet ici en Afrique, ça va être une preuve pour nous que cette technologie est vraiment réelle et qu'elle fonctionne ou elle va fonctionner réellement. He is saying that like there are a lot of players who are interested or who will be investing online, but for that they need an assurance that like this technology is certified or patented in Africa. यस, ऑलराइट, ओके। तो अभी इनको क्या बोलिए, अभी इनको बोलिए कि देखिए ये ऑलरेडी ग्रांटेड है, इसका जो पेटेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांटेड है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस बाय द यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ये पब्लिश हो चुका है, जिसमें हमें अफ्रीका देशों के सहित 170 कंट्रियों के अंदर हमें आईपीआर प्रोटेक्टेड है। Nous avons déjà un brevet par le gouvernement de l'Inde. Le brevet a été délivré par le gouvernement de l'Inde. Et on a aussi un droit à la propriété intellectuelle de cette technologie par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et cette organisation couvre plus de 170 pays. जस्ट अ मोमेंट, यशवीर, Oui, हाँ oui, बोलो एक बार। ok, कितना go, टाइम go. 5-10 ऑफ ही है क्या? हाँ, एक मिनट, ओके। अभी रुकना। सूर्य, सिर्फ 5 मिनट में हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? बस इसको देखिए आप क्या बोल रहे हैं। ओके, सभी अफ्रीकन कम्युनिटी को मैं, यशवीर सिंह, जो आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी जो बताया आपने कि ट्रस्टिंग, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट पे हम उनके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, कैबिनेट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उनकी प्रोफाइल भी काफी बड़ी है। उन्होंने ऑलरेडी स्काईवे जैसे प्रोजेक्ट को प्रमोट किया था, तो वो लोग हमारे साथ ऑलरेडी लगे हुए हैं। उनका पहले दिन हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से ही पहले उनका लेटर रिलीज करवा लिया था उनकी मिनिस्ट्री के थ्रू। जैसे कि एक अफ्रीका के अंदर किसी मिनिस्टर से लेटर रिलीज करवाना, उस लेवल पे हमने इंडिया से लेटर रिलीज करवाया। इतना ये सिक्योर, इतनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी है। Sorry, could you just repeat once again? Sorry, just. ओके, वापस बताना है? हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ में। ओके, इन्हें बताइए कि इसकी हम यदि देखते हैं टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा ट्रस्टी है, वो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम काम कर रहे हैं। ऑफिशियल लेटर हमारे पास में है। रेलवे बोर्ड, जैसे अफ्रीका के अंदर ट्रेन चलती है, उसके रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर्स का ऑफिशियल मेल हमारे पास में है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सेकंड, जो प्रोजेक्ट स्काईवे आज की डेट में आप देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के जो नितिन गडकरी जी है, जिन्होंने जो 6 साल बाद स्काईवे ने जो चीज करी, वो चीज हमने पहले दिन कंपनी के स्टार्ट करने से 2 महीने पहले उनसे गवर्नमेंट से लेटर निकलवा लिया। इस इनोवेशन के लिए इसको इतना ज्यादा वेरीफाइड कर चुकी है गवर्नमेंट भी। Si vous voulez voir si on est fiable ou non, vous pouvez voir que nous travaillons déjà avec le gouvernement indien et le ministre des Transports routiers a félicité cette technologie et nous travaillons aussi avec le Railway Transport Board en Inde. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que cette technologie est fiable et vous pouvez investir sans avoir
un souci. ओके, तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं सिंपल सा, कि अफ्रीका के अंदर कोई मिनिस्टर है बहुत बड़ी पोजीशन पे, और वो पूरा एक कंट्री को लीड करता है कि एक सेक्टर के अंदर, जैसे तो वो लेवल पे हमने इसको प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट के पास। Donc, on a le soutien du gouvernement indien et si vous pouvez même comparer, si il y a un responsable politique en Afrique qui avait soutenu une technologie ou une idée quelconque, les gens ou les investisseurs auront confiance dans cette technologie. ठीक है। ओके, इसमें तो बहुत अभी मैं बहुत ज्यादा लंबा मत करो हम्म। बस। सूर्या, आप आखिरी कमेंट लो कॉफी से, और फिर इसको क्लोज करें क्योंकि टाइम अभी ओवर हो रहा है ना? Monsieur Kofi, est-ce que vous pouvez présenter votre dernier commentaire pour qu'on puisse clôturer cette séance? Allô? Oui, je viens d'entendre Yacine, hein. Alors, il faut comprendre que on ne doute pas de la fiabilité. On ne doute pas de la fiabilité de Nikon Brover, seulement qu'il est important qu'on soit à un niveau gouvernemental. D'autant plus qu'on parle de technologies qui puissent, on va dire, aider des pays. Il est important qu'on se régisse aux règles de ce pays-là. Voilà pourquoi je parle de vouloir déposer un agrément au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau même de l'Afrique. Sinon, Basically, pas qu'on doute de la fiabilité, mais il serait encore plus intéressant si on déposait un brevet ou bien si on avait un brevet de cette technologie en Afrique. C'est de ça que je parle en fait. Basically, what he's saying is he does not doubt, he does not have any doubt about the trustworthiness of the Unicorn Brothers or this technology, but it would be better, it would help you in the long run if you have a patent in Cote d'Ivoire or for that matter, like on the African level. All right. Okay, we will work out and file patent in the Ivory Coast, Togo, Nigeria, Senegal, Burkina Faso, like Benin. this. Yeah. Benin also. Thank you. Yeah. No. Thank you very much. Ok, vraiment merci beaucoup. C'était super la présentation. Et j'espère qu'on fera de plus en plus de présentations comme celle-là pour que tout le monde puisse comprendre et maîtriser le projet. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye, sir. Bye. Thank you.